Good morning, everyone. A very good morning to all of you, bachcho, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the ESE Officer Series for Engineering Services PYQs. So I'm live in the last session of Electrical Machines, Electrical Machine Part number 7. Come on, everybody, quickly join the session, everyone. Come on. So we are about to start, bachcho. Let us start with the first problem. Based on induction machine ESC 2015, for obtaining very quick braking of three-phase wound rotor induction motor running on load, what will you do? You need very quick braking. For quick braking, you will use plugging. How to do plugging? By changing the phase sequence. For that we need to exchange two stator terminals. ठीक है, प्लगिंग के लिए स्टेटर के दो टर्मिनल एक्सचेंज कर देते हैं एंड इट इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ब्रेकिंग बट द हीटिंग इज वेरी हाई. A three-phase induction motor is loaded from no load to rated load. What happens? No load to rated load, what will happen? For EC, yes, improvement in power factor from no load to full load power factor increases. Torque is proportional to slip, yes. Air gap flux falls sharply, no. Phi is almost constant. Just like transformer, flux remains almost constant. So B, 1 and 2 only. Okay. Next, ESC 2015. A small three-phase induction motor has a short circuit current of 5 times the full load current and the full load slip is 5%. Starting resistor, stator resistor starter होगा. Stator resistance starting is used to reduce the voltage to 60% of normal voltage. How much starting torque is produced? बताइए. साइबर वॉर एज इन बेटा जतिन किस सेंस में साइबर वॉर? अगर इंडिया पाकिस्तान के सिचुएशन पे कह रहे हो तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज दैट केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग अ साइबर वॉर विद इंडिया. इफ इट वाज चाइना देन यस इट वाज अ पॉसिबिलिटी. वोल्टेज इज 60%. 25 into 0.6, 15 into 0.69. B, 45%. Okay, B. Next, ESC 2015. Frequency of rotor EMF is 2 Hz. Supply frequency 50. Motor speed is? What is the motor speed? So slip is this. Seven 720 RPM. The motor speed is 720 RPM. Okay. A three-phase induction motor operating at a slip of 5% developed 20 kilowatt rotor output. What is the corresponding rotor loss? ESC 2016.
corresponding rotor copper loss. So it will be C. Answer will be C. Next, ESC 2016. Increasing the air gap of a squirrel cage induction motor will result in, इस पे हमने कल भी चर्चा की थी, इंक्रीज इन द मैग्नेटाइजिंग करंट बिकॉज एज एयर गैप इंक्रीजेस reluctance increases, so I mu again increases. For a three-phase induction motor, ESC 2016, what fraction of supply voltage is required for a DOL method such that starting current is limited to 5 times the full load current and motor develops 1.5 times the full load torque at starting? 1.5 times the full load torque at starting. I think बेटा यहाँ पे ना SFL is not given. Okay. So this is given to me as 1.5. This is given to me as 5. Now X it is asking. So SFL is missing. चलिए next, ESC 2016. What is the material used in the slip ring of induction machine? What is the material used for slip ring? Phosphor bronze. Phosphor bronze. Again ESC 2016. Stator loss is 2 kilowatt. Motor is running with a slip of 4%. Power input 90 kilowatt. What is the mechanical power developed? बताइए. So air gap power is this. $84.48. ESC 2016 again. If a three-phase slip ring induction motor is fed from the rotor side with the stator winding short circuited. So beta, when it is fed from the rotor side, it is inverted induction motor with stator winding shorted. Then frequency of current in the stator side, SF. Okay. So basically in inverted induction motor, rotor frequency is F, stator frequency is SF. So stator and rotor frequencies are exchanged in case of inverted induction motor. ESC 2016, the reversing of a three-phase induction motor is obtained by
आप कैसे रिवर्स करोगे मोटर का रोटेशन? हाउ कैन यू रिवर्स द रोटेशन डायरेक्शन? यस, डी, बिकॉज इट रिवर्सेस फेस सीक्वेंस। जैसे बी और सी अगर एक्सचेंज कर दिए, फेस सीक्वेंस रिवर्स, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड direction reverses. Rotating magnetic field will now rotate in the opposite direction. Okay. Next, on the torque speed curve of an induction motor, 4 points are A, B, C, D. What point represents slip greater than 1? Very easy. So slip greater than 1 is A. Correct? Next, ESC 2017. The maximum torque of induction motor is independent of rotor resistance. Yes. Yes. Correct. And the slip is proportional to rotor resistance. But this is not the correct reason. Slip proportional है, इसका मतलब ये नहीं है कि it is independent. You can't directly say that. ESC 2017. A three-phase induction motor is a self-starting machine. A star delta starter is used to produce the starting torque. A star delta starter is used to produce starting torque. Okay, it's not used to produce starting torque but to limit I starting. Okay, it is used to limit I starting. Leakage reactance of the lower cage in a double squirrel cage induction motor is considerably higher than the upper cage. The lower cage has higher permeance for leakage flux. Permeance is basically 1 upon reluctance. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। लोअर केज का ना रिलक्टेंस कम होता है, वहां से लीकेज फ्लक्स आसानी से जा सकता है, तो इट हैज हायर परमियंस। तो लोअर केज हैज मोर लीकेज एंड लेस रेजिस्टेंस, अपर केज हैज लेस लीकेज एंड मोर रेजिस्टेंस। ESC 2018, in a induction motor for a fixed speed at a constant frequency. Fixed speed at constant frequency means S is fixed. So line current is proportional to voltage, torque is proportional to voltage square. Okay. ESC 2018. Try this. ESC 2018 air gap power, it is asking.
हाँ जी, let us see. A induction motor is drawing 50 ampere current at 0.8 power factor. So root 3 VI cos phi. What about the stator losses? Stator copper is 1.5. So air gap power this is basically stator copper plus core loss. 16 into root 3. 27.7 minus 2.7. So it is 25 kilowatt. Correct? Next, ESC 2018. As the slip of an induction motor approaches zero, the effective resistance जैसे जैसे स्लिप जीरो को अप्रोच करेगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एंड मोटर इज अंडर नो लोड. ओके, next ESC 2018. A 4-pole 50 Hz 3-phase induction motor with a resistance 0.25 develops maximum torque of 25 at 1400. What is X2 and SMT? लो क्यों होगा बेटा? R2/S होता है ना रेजिस्टेंस. Now SMT is R2/X2. D. Next, a three-phase, again ESC 2018, a three-phase 37 kilowatt. A three-phase 37 kilowatt induction motor efficiency of 90%. Stator copper loss and rotor copper loss are equal and stator iron loss is also equal. Stator copper, rotor copper, iron loss. Mechanical loss are 1/3 of no load loss. Now what is no load loss? It is iron plus mechanical. Therefore, P mechanical is P iron by 2. Now, efficiency is 90%. Input power is output by efficiency. So, loss are P, P, P and P by 2. So, what is the value of P? 3P, 3.5P. 1.1746 किलोवाट. ओके, सारे लॉसेस मैंने ऐड कर दिए. नाउ इट इज आस्किंग अस द स्लिप. एयर गैप पावर is input minus P core. (41.11 minus 2 into this) 38.76
rotor copper loss SPG is equal to P 1.1746. So S is basically the ratio of this 0.03. तो स्लिप आ गई 0.03. ओके, आंसर इज 0.03. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ESC 2018. Starting current is 5 times the full load current. Full load slip is 4%. The ratio of starting torque to full load torque. See. Next, statement type question. A very efficient method of speed control is to vary both V and F such that V by F is constant. Keeping V by F constant allows the flux to remain constant and the reduced voltage reduces the inrush of starting current. बताइए. तो आंसर शुड बी बी. क्योंकि देखो यार, सेकंड स्टेटमेंट स्टार्टिंग की बात कर रही है और फर्स्ट स्टेटमेंट बात कर रही है स्पीड कंट्रोल की. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट स्पीड कंट्रोल and second statement is about starting. So that is why the answer should be B. Next, ESC 2019. Cogging in an induction motor is caused. Cogging किस वजह से होता है? If the number of stator slot are integral multiple of rotor slot. Again 2019. A 500 horsepower 6 pole 3 phase 440 volt 50 hertz induction motor has a speed of 950 rpm on full load. The full load slip and the number of cycle rotor voltage makes per minute. रीजनिंग में ये देखो यार, आपको देखो, आप स्टेटमेंट पढ़ के खुद उसका रीजन सोचो. अगर स्टेटमेंट 2 मैच कर रही है तो ठीक है. तो स्लिप इज 5%. टू 2.5 oscillation per second. तो आंसर इज सी. सी. Okay. ESC 2019 again, a three-phase induction motor drives the blower whose load torque is proportional to speed square. If the motor operates at 1450 rpm, maximum current in terms of rated current will be nearly. Current in terms of rated current will be nearly. Torque is proportional to square of speed.
मैक्सिमम करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट। स्पीड मुझे पता है, मैं सिंक्रोनस स्पीड 1500 मान के यहाँ से स्लिप निकाल सकता। मैक्सिमम करंट in terms of rated current, torque is proportional to square of the speed, टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पे 1 - का स्क्वायर और आ जाए। पता है करंट का रेशो मांग रहा है ये, मैक्सिमम करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट। टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क आई स्क्वायर आर एस, उसके लिए एसएमटी लगेगा ना। एसएमटी कैसे? देखो यहाँ पे ये हो सकता है, assume ns equal to 1500 rpm, ओके, तो 1/30। टॉर्क इज proportional to speed square, correct? And also we know this ratio is so can I calculate SMT? This is 1/30. 1 minus 1/30. Two 30 s square plus 1/30 square. s तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर यहाँ से s निकालना पड़ जाए। Okay, how I am writing this is torque is proportional to air gap power, which is equal to 3 I2 square R2 by S. So proportional to I square by slip. इस बेसिस पे टॉर्क और करंट का रिलेशन मैं सोच रहा हूं, ठीक है, टॉर्क और करंट का रिलेशन। अब बात ये है कि मेरे पास एसएमटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एसएफएल है। अब या तो मैं एसएमटी यहां से सॉल्व करके निकालूं, बट ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। 3.4 कैसे निकाले हो बताओ? एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए थी क्या? क्वेश्चन तो सॉलिड है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ईएससी लेवल पे इतनी कैलकुलेशन तो नहीं देगा यार।
Now this is कि torque is proportional to speed square. Now di by ds, s to the power half 1 by 2 root s to the power 3 by 2. So s will be 1 by 3. Okay. Now I max by IFL. ठीक है. S max is 1 by 3, SFL is 1 by 30 root 10. S max is 1 by 3. 20 by 29. 2.2. तो ये आ जाएगा. ठीक है. इस टाइप से आ जाएगा. तो ये करंट एट मैक्सिमम टॉर्क की नहीं बात कर रहा है, ये एब्सोल्युटली मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम करंट एट मैक्सिमम टॉर्क. It is talking about maximum current. So we have to take the derivative and maximize the current. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ESC 2020. Induction motor can be regarded as generalized transformer due to certain similarities. Except क्या सिमिलर है? बताइए. Induction motor can be regarded as generalized transformer due to certain similarity, except what is difference between transformer and induction is speed. Okay, speed नहीं होती ना ट्रांसफॉर्मर में. A three-phase 400 by 200 volt star connected wound rotor induction motor has rotor resistance, standstill reactance. I need to make starting torque equal to maximum torque. For that, SMT must be 1. So answer is A, 0.24. ESC 2020 again. In a three-phase induction motor, maximum torque is directly proportional to reactance. No, it is inversely proportional. In three-phase induction motor, the speed and slip at which maximum torque occurs is determined by resistance. Yes. D. ESC 21. A three-phase squirrel cage induction motor is developing 1500 synchronous watt. This is air gap power. At 50 Hz, 1400 RPM. If motor frequency is now 75 Hz, using constant power mode, what is the new value of torque at constant slip? स्लिप सेम है, नया टॉर्क कितना आएगा? Now omega s is constant. Since power is constant, therefore torque is also constant. So answer is A. ठीक है, आंसर शुड बी ए. बात समझे? सॉरी, ओमेगा एस लेकिन कांस्टेंट नहीं हो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना. ओमेगा एस टू थाउजेंड.
तो टॉर्क आपका 1000। ओके, टॉर्क विल बिकम 1000। ये जो सिंक्रोनस वॉट होता है ये एयर गैप पावर होती है। ओके, दिस इज योर एयर गैप पावर। ESC 22, in generating mode a induction machine operates as generator with shaft speed greater than synchronous speed if the slip is, generating mode में slip क्या होती है? Negative. In generating mode the slip is negative. ESC 22 again, a 3-phase 60 Hz 25 horsepower star connected induction motor operates at a speed of 1800 rpm at no load, 1650 rpm at full load. What are the number of poles? So N no load is approximately NS. So poles are 4. ESC 23. The stator and rotor slots of a asynchronous motor, that is induction motor, are designed to traverse the axial length of the magnetic core at an angle from the two axial direction. Average value of MMF over the axial length of a magnetic core is MMF का शेप कैसा होगा? यहां पे बेसिकली ये कह रहा है जो स्लॉट है ना आपके वो स्क्यूड है. The slots are skewed in nature. So what will be the shape of the MMF? It will be a step transition. Okay, it will be a step transition यानी sudden transition आएगा. ESC 23. इतना पोल होगा यहाँ पे, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा यार. 4 पोल हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है? 4 पोल की ही पॉसिबिलिटी लग रही है. चलो 4 पोल कर लो यार. तो स्पीड ऑफ MMF 1500 50 pi B. Okay, next, a three-phase 60 hertz, a three-phase 60 hertz, 25 horsepower star-connected induction motor operates at a shaft speed of 1800 at no load, 1650 at full load. Speed of the rotor field with respect to rotor and with respect to stator field. रोटर के रेस्पेक्ट में और स्टेटर फील्ड के रेस्पेक्ट में. देखिए, N no load is approximately NS. N full load is equal to NR 1650 RPM. Now, magnetic field rotates at NS, correct? Therefore, at NS minus NR with respect to rotor. तो रोटर के रेस्पेक्ट में NS minus NR पे that is 150 RPM and stator and rotor MMF are stationary with respect to each other. Therefore,
रिलेटिव स्पीड इज 0। स्टेटर और रोटर एमएमएफ की आपस में रिलेटिव स्पीड हमेशा 0 आती है। नेक्स्ट 35 ESC 2024, ESC 2024, rotor input running with a slip of 10% is 100 kilowatt gross power developed by the rotor. Rotor input is actually air gap power, correct? It is air gap power, simple. चलिए, ESC 2001, in a shaded pole induction motor the rotor runs, रोटर की डायरेक्शन क्या होती है भाई शेडेड पोल में? क्विकली, व्हाट इज द डायरेक्शन? unshaded portion to the shaded, where the flux of the unshaded leads the shaded. हमेशा लीडिंग से लैगिंग फ्लक्स जाता है, तो अनशेडेड का फ्लक्स शेडेड को लीड करता है, इसीलिए रोटेशन अनशेडेड से शेडेड होती है। ऑलवेज रिमेंबर, रोटेशन इज फ्रॉम लीडिंग फ्लक्स टू लैगिंग फ्लक्स, flux of unshaded portion leads the shaded portion, so rotation is from unshaded to shaded. The torque of a reluctance motor can be increased by, it can be increased by decreasing the ratio of xq by xd. देखिए xd is greater than xq, so the smaller xq is as compared to xd, more non-uniform air gap is and more is reluctance torque. देखिए रिलक्टेंस टॉर्क डिपेंड करता है नॉन यूनिफॉर्मिटी पे, ओके? तो जितना ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी होगा, माने XD XQ में जितना ज्यादा डिफरेंस, उतना ज्यादा रिलक्टेंस टॉर्क। स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर? इट इज अ स्टेपर मोटर, ओके, विथ क्लोज लूप कंट्रोल. It is a stepper motor with closed loop control. ESC 2002, stepper motor are widely used because of compatibility with digital. Stepper motor का input pulse form में होता है. The input is in the form of a pulse, therefore it is compatible with digital. A two-phase servo motor in a control system uses drag cup rotor. It is a hollow cylinder. What is drag cup rotor? Hollow cylinder, less inertia, therefore more speed. Capacitor in a single phase induction motor is used for improving the starting torque. Okay, simple, improving the starting torque. Or you can say starting the motor ज़्यादा सही है. Without capacitor, actually the motor may not be able to start. A single phase motor is not self-starting. A three-phase motor is self-starting. Both are correct. But is it the correct explanation? No. दोनों अलग अलग पॉइंट है ना. सिंगल फेज क्यों नहीं होती सेल्फ स्टार्टिंग? बिकॉज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड कैंसिल द टॉर्क. फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली फील्ड एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल करती हैं. Correct sequence in the ascending order of magnitude of starting torque. Ascending order. 4. Then permanent split capacitor. Capacitor run basically 3, 2, then 1. Okay. Capacitor start and run में सबसे ज्यादा capacitor start and run से भी ज्यादा capacitor start में आता है starting torque. ESC 2003. Single phase induction motor is not self-starting. Yes. No rotating field is set up. No rotating field is set up. Yes. Because it is a standing wave.
ट्रैवलिंग वेव नहीं होती है बेटा, रोटेटिंग फील्ड जो होती है, बेसिकली इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज अ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. इट्स नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, इट्स नॉट अ रोटेटिंग फील्ड. Computer printer drive. Which motor is used for a computer printer drive ESC 2004? It is a stepper motor. क्योंकि स्टेप्स में लिखना होता है ना, अल्फाबेट पर्टिकुलर स्पेसिंग पे लिखे जाते हैं, तो इट हैज टू राइट इन द स्टेप्स, हेंस स्टेपर मोटर. For reluctance type motor, if the stator angular velocity is omega, actual rotor angular velocity is omega r. So which of the following equation is satisfied if the torque is non-zero? अगर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी ओमेगा है और रोटर की स्पीड है ओमेगा आर. रिलक्टेंस मोटर इज अ सिंक्रोनस मोटर, तो रोटर स्पीड इज सेम एज स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ओमेगा है, रोटर की ओमेगा आर, बोथ मस्ट बी सेम बिकॉज इट इज सिंक्रोनस. Which of the statement is correct? ESC 2004. When a single phase induction motor is excited with single phase AC, the magnetic field setup is equivalent to two fields rotating at ns in opposite direction. दोनों फील्ड ns पे ही घूमती हैं, but one is forward, other is backward. A single phase induction motor is not self-starting. Yes. It develops only pulsating field which produces zero torque. Absolutely correct. मैंने यही बताया ना, वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन है that is called as a pulsating field. It behaves like a standing wave. A capacitor start single phase induction motor is used for capacitor start single phase induction motor. तो कैपेसिटर स्टार्ट कहां पे यूज करोगे? वेयर यू नीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अमंग ऑल द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. इट हैज मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अमंग ऑल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. In hand tool application, which single phase motor is used? Hand tool में AC series, okay, like drill and etc. Which of the following is a type of single phase induction motor having highest power factor? Capacitor run. भाई फुल लोड पे अगर कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा तभी ना पावर फैक्टर ज्यादा आएगा. If capacitor remains connected. A single phase induction motor is running at n rpm. Synchronous speed is ns. Slip with respect to forward field is s. What is it with respect to backward field? 2 minus s. Forward के respect में s है, backward में 2 minus s. Highest numeric value in a stepper motor. Detent torque. Remember this. Detent torque is the highest torque. Okay. Match the column ESC 2007. Okay. ESC 2007 it is. We have to match the application. General purpose split phase. General purpose capacitor start. Permanent split capacitor start. Shaded pole. Shaded pole. Okay. Your options are this. So general purpose is used in refrigerator, capacitor start hair dryer, permanent split capacitor fan and blower, shaded pole heaters. The answer is, you can remember this. ESC 2008. Why is a centrifugal switch used in a single phase induction motor? स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए. अप्रोप्रिएट इंस्टेंट मींस व्हेन स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 0.75 ns. जब स्पीड आपकी 0.75 ns आ जाए तब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं.
Next statements ESC 2013 which are correct. Asynchronous motor has no starting torque, but when started it runs at a fixed speed. A single phase reluctance motor is not self-starting even if path of eddy current are provided. A single phase hysteresis motor is self-starting. The answer should be D. स्पीड फिक्स नहीं होती बेटा इंडक्शन की. Speed varies with load. Next, for a given applied voltage and current, the speed of a universal motor will be, it will be higher in DC excitation. In AC, what happens? Due to reactance drop, EMF decreases, speed decreases. ESC 2016, if the capacitor fails to open when the motor picks up speed, क्या होगा? अगर कैपेसिटर ओपन नहीं हुआ तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग विल बी डैमेज्ड बाय ड्यू टू हाई करंट. ओके, ड्यू टू हाई करंट ओवरहीटिंग ऑक्सिलरी डैमेज हो सकती है. वेरी गुड. इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा बताइए? कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल. आप किसी भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दीजिए. यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एनी वन वाइंडिंग. ESC 2017, a permanent magnet stepper motor. Permanent magnet stepper motor, 8 pole in stator, 6 in rotor. Step angle B, 15 degree. Next, ESC 2018, a 230 volt 50 hertz 4 pole single phase induction motor is rotating forward at 1425 rpm. Rotor resistance at standstill is 7.8. Effective resistance in the backward branch. So NS is R2 by 2. So this will be 2. Next, ESC 2018, a two-phase AC servo motor has a tendency to run as a single-phase induction motor if the voltage across control winding becomes zero. To prevent this, क्या करेंगे? To prevent this, use a drag cup type rotor. Drag cup type का rotor use कीजिए which has low inertia and which can run at a higher speed. A single stack 8-phase multi-step motor has 6 rotor teeth. The poles are excited one at a time. Frequency is 120. The speed is. The speed of the motor is. बताइए. हाँ भाई. So what is the step angle
48, 360 by 48, 7.5 डिग्री। ठीक है, 120 हर्ट्स मीन्स 120 पल्सेस पर सेकेंड, तो थीटा 120 into 7.5, 900 degree, which is how much? 2.5. जस्ट अ मिनट बच्चों। Single stack 8 phase, 8 into 6 is 48. 360 by 48, 7.5. 120 into 7.5, 900. यार आना तो यही चाहिए फिर, 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बेटा ईसी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे कॉमन सब्जेक्ट्स में नहीं आते, उनके पीवाईक्यू मैं कैसे करा दूंगा नितिन भाई? एक बार यार मैं चेक कर लूं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से 2.5 आना चाहिए और आंसर दे रखा है 5। मेरे हिसाब से 2.5 बनना चाहिए इसका स्टेप एंगल के अनुसार। अगर वैसे निकालोगे, चाहे सिंगल स्टैक है ना, यहाँ पे एम जो होता है स्टैक होता है, 8 फेज को 8 टीथ की तरह ले लो, तो दिस विल बी नाउ 15 डिग्री। वन रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री ना, तो इट इज 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। Next, advantages of a stepper motor: compatibility with transformer and sensor, compatibility with digital system and sensor are not required, easy to resonance often exhibited at low speed and decreasing torque, easy to operate. B, डिजिटल सिस्टम से कंपैटिबल है और यहां सेंसर की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ फीडबैक, देयर इज नो नीड ऑफ फीडबैक। स्टेप एंगल 2.5 डिग्री, shaft has to make 25 revolution, number of step, ESC 2020। बेटा रिसेंटली अजमीरा आई टुक अ सेशन अबाउट गेट प्रिपरेशन, यू कैन वॉच दैट सेशन, कुछ ही समय पहले मैंने लिया था। तो 25 revolution means 25 into 360, the steps 3600. Okay. In which of the following aspects servo motor differ from large industrial motor? सर्वो मोटर कैसे डिफरेंट है बताइए? दे प्रोड्यूस हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड इंक्लूडिंग जीरो स्पीड। ओके, हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड, यस। They are capable of holding a static position. Yes, position control is possible. They do not overheat. Yes, due to low inertia, they are not able to. They are able to actually.
लो इनर्शिया है तो जल्दी रिवर्स हो सकते हैं ना बेटा. Whichever body has high inertia, it is difficult to change the state of motion. But due to low inertia, we can change the direction. Next, ESC 21. Step angle of 15 degree, 300 steps per second. What is the speed? One revolution is 360 degree. Revolution per second. In 1 minute, how much? 1 minute 60 second. 750 RPM. ESC 21, the single phase reluctance machine can be made to work as a generator when mechanical power is supplied to the shaft. This is possible when reluctance machine को आप generator बना सकते हो when mechanical power is increased and delta is positive. Here delta is negative, so it is motor. Okay. ESC 22. In case of a squirrel cage induction motor using three-phase bridge inverter, what is correct for speed control? ब्रिज इन्वर्टर की मदद से आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं. व्हाट इज करेक्ट? V constant, F increases. So starting torque decreases. F decreases, so starting torque increases. This is also correct. अगर F घटेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा. ओके, बट इसको यूज नहीं करना क्योंकि सैचुरेशन का चांस है. अगर V कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हो तो देयर इज अ चांस ऑफ सैचुरेशन. सेकेंड लास्ट, ESC 2023. A stepper motor and a digital driver circuit is furnished with a train of F pulses per second. Input is divided so that output is sent in sequence to one phase winding at a time with 2p number of phases, k number of teeth. Then the rotor angular motion per pulse is a step of I by kp. Okay, number of phases and number of teeth. Last question, ESC 24. Step rate of a permanent magnet and variable reluctance motor is, ये आपको याद रखना पड़ेगा. This you have to remember the maximum stepping rate for permanent magnet and variable reluctance stepper motor. तो भाई मैंने मशीन्स के आपको 2024 तक के PYQ करा दिए. We have solved the PYQ till ESC 2024 and now I will personally resume from 15th with power system. In the meanwhile, Neeraj sir will come, Hemendra sir will be there, Ankush sir will be there. All of these people are going to solve ESC PYQ. Okay. Thank you. Take care. All the best.